Assalamualaikum and welcome to Online Skills. Let's talk about theorems on line bisector and angle bisector. According to first theorem, any point on right bisector of line segment is equidistant from its end point. जबकि second theorem इसी का converse theorem है, which says any point equidistant from end points of line segment is on right bisector of it. Let's verify this theorem. तो मैं एक line segment draw करता हूँ. Now I draw right bisector of it. So I select this line, I intersect the line and line segment. Now according to theorem, अगर हम इस right bisector पर कोई भी point locate करते हैं तो ये point इन दोनों end point से same distance पर होना चाहिए. तो let's check the distance from D to B and D to A. Both distances are equal, which proves that कि ये point is on the right bisector of line segment. अब मैं इस point को move करता हूँ तो हम देख सकते हैं कि ये point इस line पर कहीं भी हो, इस point का distance दोनों end point से same रहता है. अब मैं एक point locate करता हूँ जो कि इस right bisector पर नहीं होगा और हम देख सकते हैं कि इसका distance दोनों end point से भी different होगा. Because the point is not lying on the right bisector of the line segment. Conversely, अगर इस point का distance इन दोनों point से same distance पर होगा, it means the point lies on the right bisector. Third theorem says the right bisector of sides of triangle are concurrent. तो मैं एक triangle draw करता हूँ और इस triangle के तीनों right bisectors भी draw करता हूँ. Right bisector of C to B, B to A and A to C. We can see that all the right bisectors are passing from same point. We can verify it by intersecting any two right bisectors. अब ये triangle किसी भी shape का हो, the right bisectors will remain concurrent. यहाँ पर नोट करने की बात यह है कि अगर ये triangle acute angle triangle है, the point of concurrency of these right bisectors will lie inside the triangle. We can see here. और जब ये triangle right angle triangle में convert होगा, then point of concurrency will lie exactly on the hypotenuse. और अगर ये triangle obtuse angle triangle होगा, तो this point will go outside the triangle. Next theorem says any point on bisector of angle is equidistant from its arms. Let's verify it. I draw a line segment and the second one to make any angle. मैं इस angle को bisect भी करता हूँ. Using angle bisector tool, I select A, B and C. To verify that this is an angle bisector, I locate a point on this angle bisector and I measure the angle A, B and D, D, B and C. We can see both the angles are equal. It means this line is angle bisector. अब हमें verify ये करना है कि ये point इन दोनों arm से equal distance पर है. तो अब हम point D से एक perpendicular draw करेंगे दोनों तरफ से. Using perpendicular line tool, point D and line AB, point D and line BC. Let's intersect this line and this line segment, this line and this line segment. Let's check the distance. D to E is 3.63, जबकि D to F is also 3.63, which proves that ये point इस angle bisector पर lie करता है. Now theorem E is the converse of theorem D कि अगर किसी भी angle में कोई point इन दोनों arm से equal distance पर होगा, then that point must lie on angle bisector.
And according to the last theorem, the bisector of angles of triangle are concurrent. Let's verify it. I draw a polygon of three-sided, I mean a triangle. अब मैं इस ट्राइंगल की हर एंगल को बाइसेक्ट करता हूँ. So I draw angle bisectors of A, B and C, B, C and A, C, A and B. Let's intersect any two angle bisectors. We can see that they have same point of intersection, which proves that the angle bisectors of triangle are concurrent. अब यहाँ नोट करने की बात यह है कि ट्राइंगल किसी भी शेप का हो, एक्यूट एंगल हो, ऑब्ट्यूज एंगल हो या राइट एंगल ट्राइंगल हो, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज एंगल बाइसेक्टर्स विल लाई इनसाइड द ट्राइंगल. आई होप यू फाइंड दिस इंफॉर्मेटिव. हम अपनी अगली वीडियो में ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ और थ्योरम्स पर बात करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. अल्लाह हाफिज़.